Good morning, students. Today I will be discussing the remaining topics of our type animal Herdmania. So we will be doing nervous, respiratory and excretory system. Now if we talk about the nervous system in Herdmania, then nervous system is very simple in Herdmania, but it still can be divided into two parts: central nervous system and peripheral nervous system. As you know, we also have central and peripheral nervous system. Apart from that, we have autonomic nervous system also, but in Herdmania we have only central nervous system and peripheral nervous system. And if you talk about central nervous system in Herdmania, then the main part of central nervous system is termed as nerve ganglia. Now you can see this in figure 4.20. This is the nerve ganglia, right? And this nerve ganglia is located in इंटरसाइफनल रीजन, यानी जो ब्रेंकियल साइफन और एट्रियल साइफन के बीच की स्पेस है, वहाँ पे you can find this nerve ganglia. And if you talk about the composition of nerve ganglia, then it is composed of bipolar and multipolar neurons and nerve cell. Now what are bipolar and multipolar? Bipolar means we have a nerve cell with a single axon and a single dendrite, whereas multipolar में एक axon होगा और बहुत सारे dendrites होंगे. Fine. And along with it we can have ganglion cells also. You can have a look on figure 4.21, which is given on the left side. This figure, this is the LS of nerve ganglia, यानी longitudinal section अगर हम nerve ganglia की काटें, then we can find these nerve cells. Can you see these nerve cells? These nerve cells, and we have nerve fibers. और ये nerve cells क्या होंगे? Bipolar होंगे या multipolar होंगे. And apart from nerve cells, we can also find ganglion cells. Fine. Now if you talk about peripheral nervous system, अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नॉर्मली हमारे अंदर क्या आता है? क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स, बट यू डोंट हैव एनी स्पाइनल कॉर्ड हियर. लेकिन हर्डमेनिया के अंदर भी वी हैव टू नर्व्स, एंटीरियर नर्व एंड पोस्टीरियर नर्व. नाउ अगेन इफ यू सी दिस फिगर 4.20, यू कैन सी कि नर्व गैंग्लिया से अराइज कर रही हैं 1, 2 और 3 एंटीरियर नर्व्स और 2 पोस्टीरियर नर्व्स. फाइन. तो peripheral nervous system includes 3 anterior nerves and 2 posterior nerves. अभी मैंने आपको बताया कि जो nerve ganglia है that is located in intersiphonal region, मतलब 2 siphons के बीच में ये located है. तो nerve ganglia से जो anterior और posterior nerves निकल रही हैं, they will surround apertures. कौन से aperture? Branchial aperture और atrial aperture. Now here you can see, let me just show it with yellow color. Now you can see anterior nerves जो हैं वो निकल रही हैं यहाँ से 1, 2 और 3 and it is surrounding this aperture which is branchial aperture. और अगर हम इधर देखें posterior nerves निकल रही हैं and it is surrounding atrial aperture. Fine. और अगर आप anterior nerves में देखें तो 2 anterior nerves बहुत बड़ी हैं और एक जो है वो छोटी है. Fine. तो 3 anterior nerves हैं टोटल और 3 में से 2 जो हैं वो लंबी हैं, बड़ी हैं, और एक जो है वो छोटी है. Whereas we have 2 posterior nerves which are going to encircle the atrial aperture. So just to summarize, Herdmania में we have central nervous system and peripheral nervous system. Central nervous system में nerve ganglia आता है which is located at intersiphonal region, and if we cut the LS of nerve ganglia, you can see 2 types of cell: nerve cells and ganglia cells. Nerve cells जो हैं they can be bipolar और multipolar. और अगर हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें, देन वी हैव 2 पोस्टीरियर नर्व्स विच एनसर्कल द एट्रियल एपर्चर एंड 3 एंटीरियर नर्व्स विच एनसर्कल द ब्रेंकियल एपर्चर. सो नाउ कमिंग टू रेस्पिरेटरी सिस्टम इन हर्डमेनिया. तो मेन जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है हर्डमेनिया में दैट इज ब्रेंकियल सैक. आई टोल्ड यू कि फेरिंग्स के 2 पार्ट्स हैं, प्री ब्रेंकियल जोन एंड ब्रेंकियल सैक. ब्रेंकियल सैक जो है
is the part of the pharynx which gives a basket-like appearance to it, and it has large number of stigmata, and these stigmata are lined with cilia. तो ब्रेंकियल सैक जो है हर्डमेनिया में मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, and why it is so? Because it has rich blood supply and it constantly comes in flow in contact with the fresh sea water that flows through the sac as a regular current. और वो पानी क्यों आता है अंदर? बिकॉज हर्डमेनिया जो है वो फिल्टर फीडर है और उसको अपना खाना पानी से ही लेना है, तो वो पानी कॉन्स्टेंटली बॉडी के अंदर आता है, ब्रेंकियल सैक के अंदर आता है। और ब्रेंकियल सैक में जो ब्लड वेसल्स हैं वो क्या करते हैं? दे extract the dissolved oxygen and exchange carbon dioxide from the blood flowing in the walls of branchial sac. The walls of the blood vessels facing the branchial sac are very thin, and this facilitates the gaseous exchange. Efficiency of respiration is further increased by longitudinal folds. अब मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में जब हर्डमेनिया की इंट्रोडक्शन कराई थी तो मैंने आपको बताया था कि जो ब्रेंकियल सैक है उसमें बहुत सारे लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स होते हैं विच बेसिकली इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर रेस्पिरेशन, राइट। सेकेंड जो मेन थिंग है रेस्पिरेशन में हेल्प करती है, दैट आर ट्रेबेक्युले, एंड ट्रेबेक्युले आर बेसिकली vascular and they are constantly bathed in fresh water, leaving the pharynx into atrium. Exchange of gases also takes place in the trabeculae. और trabeculae कहाँ पे होते हैं? They stretch between the pharyngeal wall and the body wall. So basically trabeculae are structures which are present between the pharyngeal wall and body wall, जिसको हम mental भी बोलते हैं। और थर्ड जो मेन रेस्पिरेटरी पार्ट है या रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है, डेट इज टेस्ट। टेस्ट में क्या है? टेस्ट इज टर्म्ड एज एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन, और इसमें मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि टेस्ट में हमारे पास वेस्क्यूलर एम्प्यूले होते हैं, यानी जो ब्लड वेसल्स हर्डमेनिया की बॉडी में से निकलते हैं, कई बार दे एक्सटेंड अप टू द टेस्ट। तो होता क्या है, जब वो टेस्ट में पहुंचते हैं तो दे कम इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द सराउंडिंग वाटर, सो गैसियस एक्सचेंज जो है वो आसान हो जाता है। सो इफ यू टॉक अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम इन हर्डमेनिया, द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन इज ब्रेंकियल सैक, देन वी हैव ट्रेबेक्युले एंड देन वी हैव टेस्ट। Now the next topic is sense organ or receptor organ in Herdmania. Now Herdmania possesses receptors for contact, light, chemical, water current and temperatures. However, receptors for hearing are unknown. And if you talk about receptors of touch, then touch के जो receptors हैं उनको हम बोलते हैं टेंगो रिसेप्टर्स। और टेंगो रिसेप्टर्स जो हैं उनमें होता क्या है, एज यू कैन सी इन फिगर 4.22, दिस फिगर यू कैन सी दैट नॉर्मली जो टेंगो रिसेप्टर्स होते हैं उनमें हमारे पास सेल्स हैं, नर्व सेल्स हैं, जिनमें fibrils present हैं, and these fibrils are connected to each other and form a single nerve fiber. And where these tango receptors are found, these tango receptors are prevalent in non-vascular, मतलब जहाँ पे blood supply नहीं है, टेस्ट के उन non-vascular parts में epithelium covering the vascular ampullae and tentacles. Fine. So these are the three places where you can find these receptors for touch. Then we have photoreceptors. Photoreceptors are, as the name indicates, receptors for light, and they consist of groups of squamous cells containing red pigment granules in the cytoplasm, and they occur in the lining of siphons and on vascular ampullae. So photoreceptors, Herdmania can't see anything. It's only just that sometime Herdmania respond to changes in light intensity, and that change in light intensity is due to these photoreceptors, and these are present on the lining of siphons and on the vascular ampullae. और इनके अंदर होता क्या है, ये जो photoreceptors हैं squamous cells हैं और इनके अंदर red pigment granules हैं जो cytoplasm में present होते हैं। Then the third type of receptors are chemoreceptor. As the name indicates, those receptors which are sensitive to chemicals. और
हर्टमेनिया में दो हैं ऐसे कीमोरिसेप्टर्स, वन इज डॉर्सल टुबरकल एंड अदर इज टेंटिकल्स। अब आपको याद हो डॉर्सल टुबरकल मैंने आपको बताया था लाइज इन प्री ब्रेंकियल जोन, और जो इंटीरियर पेरिफेरेंजियल बैंड था उसके ऊपर डॉर्सल टुबरकल प्रेजेंट था। फाइन। अब जो डॉर्सल टुबरकल का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो यू कैन सी दिस इन फिगर 4.23. You can see this structure. I am coloring it with yellow. This whole is dorsal tubercle. अब dorsal tubercle में आपको क्या नजर आ रहा है? आपको एक बेस नजर आ रहा है, broad base, this which I am coloring with yellow, and you can see two conical structures. एक ये वाला which I am coloring with blue and one this. Fine. तो डॉर्सल टुबरकल की अगर हम बात करें, पहले तो आप बताएंगे कि डॉर्सल टुबरकल लोकेशन क्या है उसकी, और अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें देन इट कंसिस्ट ऑफ अ ब्रॉड बेस एंड टू स्पायरली कॉइल्ड कोनिकल ट्यूब्स। अब इन ट्यूब्स के अंदर क्या होता है? ट्यूब्स के अंदर सीलिएटेड चैनल्स होते हैं, दैट मीन्स इनके अंदर एपिथेलियम प्रेजेंट है। एपिथेलियम के जो सेल्स हैं दे आर सीलिएटेड, हाईली सीलिएटेड, and these epithelium cells are considered to be sensitive to chemicals, serving to taste and smell the water current entering the brachial sac. तो डॉर्सल टुबरकल olfactory कम gustatory receptor का काम करता है, means it can smell as well as taste the incoming current of water. Fine. उसके बाद सेकेंड जो कीमो रिसेप्टर है दे आर टेंटिकल्स। अब आपको पता है टेंटिकल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ब्रेंकियल साइफन में, और इनको हम क्या बोलते हैं? ब्रेंकियल टेंटिकल्स। अब ब्रेंकियल टेंटिकल्स we have rich nerve supply and they are regarded as olfactoreceptors, means they test the quality of water which is drawn through the brachial aperture. अब पानी जो है वो brachial aperture से अंदर आना है, तो इन brachial tentacles के ऊपर you have rich nerve supply and they basically taste the water current which is entering into the body of the animal. Then fourth type is rheoreceptor. Rheoreceptors are sensitive to water currents. Fine. And they occur in the rim of brachial and atrial apertures. Then we have thermoreceptors. Thermoreceptors, as the name indicates, जो temperature के sensitive हो, and they are present in the lining of siphons. Fine. So if you talk about sense organs or receptors, then there are 5 type of receptors present in Herdmania. We have tangoreceptors which are sensitive to touch. We have photoreceptors sensitive to light. Then chemoreceptors which are present at which are include dorsal tubercle and tentacles. Then we have rheoreceptors sensitive to water currents, and then we have thermoreceptors which are sensitive to temperature. Then we have another important structure present in Herdmania, that is termed as neural gland. अब अगर आप डायग्राम देखो 4.23, तो इस डायग्राम में you can see dorsal tubercle, you can see nerve ganglion, जो हमने nervous system में बात करी थी, that it is a part of central nervous system. ये वाला see, this is nerve ganglia and 2 posterior nerves हैं, अभी मैंने आपको बताया था, और 3 हमारी एंटीरियर नर्व्स हैं। एंटीरियर नर्व्स क्या करेंगी? ब्रेकियल एपर्चर को एनसर्कल करेंगी, और पोस्टीरियर नर्व्स जो हैं वो क्या करेंगी? एट्रियल एपर्चर को एनसर्कल करेंगी। अब ये नर्व गैंग्लिया है, दैट इज इट इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और ये हमने देखा कि डॉर्सल टुबरकल है। अभी मैंने आपको बताया दैट इट इज ऑल्फैक्टरी कम गस्टेटरी रिसेप्टर। अब बिल्कुल नर्व गैंग्लिया के ऊपर यू कैन सी दिस स्ट्रक्चर विच इज टर्म्ड एज न्यूरल ग्लैंड। मतलब अगर हम न्यूरल ग्लैंड की लोकेशन की बात करें, तो क्योंकि नर्व गैंग्लिया इज प्रेजेंट इन इंटरसाइफनल रीजन और न्यूरल ग्लैंड नर्व गैंग्लिया के ऊपर है, तो न्यूरल ग्लैंड इज ऑल्सो प्रेजेंट इन इंटरसाइफनल रीजन जस्ट अबव द नर्व गैंग्लिया। अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, तो न्यूरल ग्लैंड के अंदर यू कैन फाइंड few central tubes. Fine. ट्यूब्स जो हैं वो ब्रांच करती हैं एंड दे फॉर्म टिब्यूल्स, और टिब्यूल्स जो है वो कैनाल में ओपन होते हैं। फाइन। तो न्यूरल ग्लैंड के अंदर हमारे पास ट्यूब्स प्रेजेंट हैं, और ट्यूब्स आगे बाइफरकेट करके टिब्यूल्स देती हैं, और टिब्यूल्स जो हैं दैट ओपन इनटू अ लार्ज कैनाल। मतलब न्यूरल ग्लैंड के अंदर एक कैनाल प्रेजेंट है, और ये कैनाल जो है फिर
इकट्ठा होके इट फॉर्म्स अ डक्ट. ये देखो, दिस इज टर्म्ड एज डक्ट ऑफ न्यूरल ग्लैंड. अब अगर मैं इसको ब्लू से कलर करूं तो यू कैन सी दिस डक्ट, एंड दिस डक्ट इज देन गोइंग टू एंटर इनटू बेस ऑफ डॉर्सल ट्यूबरकल. मैंने आपको बताया था डॉर्सल ट्यूबरकल में दो स्ट्रक्चर्स हैं, एक तो बेस है और दो कोनिकल लोब्स हैं. ठीक है, तो न्यूरल ग्लैंड जो है दैट इज प्रेजेंट अबव द नर्व गैंग्लिया एंड इट हैज अ central, it has few central tubes, then we have peripheral tubules, और ये peripheral tubules जो हैं they open into large canal. Now this canal then leads into a duct which is termed as duct of neural gland. अब अगर हम स्ट्रक्चर्स देखें इन डक्ट का, अच्छा एक चीज और है, ये जो न्यूरल ग्लैंड जब ये डॉर्सल ट्यूबरकल के साथ अटैच होता है देन इट फॉर्म्स अ स्ट्रक्चर विच इज टर्म्ड एज फनल. अब मतलब ये वाला जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे जो न्यूरल डक्ट है that forms a structure which is termed as funnel shaped aperture. See, the duct passes between the anterior nerves and open into prebranchial zone of the pharynx by a ciliated funnel shaped aperture. मतलब जो न्यूरल ग्लैंड है वो जब डॉर्सल ट्यूबरकल में खुलता है it forms a funnel shaped structure. Now the thing you have to remember is difference in the structure of this funnel and this duct. You can see this in figure 4.24. अब जो cells funnel के अंदर होते हैं you can see in this figure A, उन cells में आप देखिए cilia present है, but this cilia is double the length of the cell. ये वाला cell है और ये cilia है, and cilia is much longer than the cell itself. लेकिन अगर हम देखें duct के cells, जो duct present है, जो duct है न्यूरल ग्लैंड का, तो उसमें you can see these non-ciliated cells. Fine. So the things you have to remember about neural gland is present in intersignal region just above the nerve ganglia. It consists of few tubes, and these tubes then branch into number of tubules which open into canal, and this canal then leads into a duct which open at the base of dorsal tubercle by a funnel shaped structure or funnel shaped aperture. Now if you talk about this funnel shaped aperture, then it is lined by epithelium cells, and those cells have cilia which are much bigger than the cell itself, whereas the cells of the duct are non-ciliated. So now if you talk about cilia of the funnel, जो हमने अभी पिछली स्लाइड में बात करी, तो cilia of funnel create an in current of water from the pharynx into the neural gland lumina and then across their walls into branchial blood vessels. The cilia on the dorsal tubercle, मैंने बताया था dorsal tubercle में दो ciliated lobes होती हैं, उनके जो cilia हैं वो क्या करते हैं, they prevent large particles such as sand grains from entering into the neural gland duct. Fine. और जो duct, जो gland की lining होती है वो क्या करती हैं, बैक्टीरिया और स्मॉल पार्टिकल्स जो वाटर में हैं उनको रिमूव करने में हेल्प करती हैं. सो तो बेसिकली न्यूरल ग्लैंड एंड डॉर्सल ट्यूबरकल दे both serve to restore and maintain fluid volume of the blood. Even some zoologists believe that neural gland may have some connection with the pituitary gland or vertebrate, but there is no concrete evidence to prove this part. Fine. Now if you see diagram on the right, then this is just another representation showing the connection between nerve ganglia, dorsal tubercle and neural gland. Now this you can see, this is the thing I am coloring with blue is nerve ganglia. अब nerve ganglia के ऊपर हमारे पास क्या था, neural gland. Now I will color it with yellow. This is neural gland. Fine. अब neural gland से क्या निकल रहा है, duct. Fine. And this duct is going where, it is joining to the base of dorsal tubercle. Now I am coloring it with red color. See, this is dorsal tubercle. Fine. So
coming to the last slide. In last slide we have excretion. अब हर्डमेनिया जो है like other tunicate, it is aminotelic. That means it excretes प्रोटीन नाइट्रोजन एज एमोनिया. अब आपको पता है जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो नॉर्मली एमोनिया ही एक्सक्रीट करते हैं. वाई? बिकॉज एमोनिया रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर एक्सक्रीशन. अब एमोनिया कैसे जाता है? एमोनिया डिफ्यूजेज अक्रॉस द फेरिंग्स इनटू द आउटगोइंग वाटर. पानी बाहर भी जा रहा है बॉडी से हर्डमेनिया के, तो एमोनिया उसमें डिफ्यूज कर जाता है. लेकिन अदर मेटाबॉलिक वेस्ट जैसे कि यूरिक एसिड and calcium oxalate are not excreted, but they are stored in cells which are termed as nephrocytes, and nephrocytes later accumulate in certain tissues such as mental pericardium and are lost on the death of the animal. This phenomena is called storage excretion. Storage excretion में क्या है कि जितने भी यूरिक एसिड या कैल्शियम ऑक्सिलेट के क्रिस्टल्स हैं, दे गेट डिपॉजिटेड into certain parts of the body of Herdmania, जैसे mental हो गया या pericardium हो गया, and when the animal dies, then only that products are excreted. So such type of excretion is termed as storage excretion. Another important topic related to Herdmania which you usually get in exam is neural complex. नॉर्मली पूछ लेते हैं एग्जाम में कि व्हाट इज न्यूरल कॉम्प्लेक्स इन हर्डमेनिया. तो न्यूरल कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं है, इट्स जस्ट नर्व गैंग्लिया जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, न्यूरल ग्लैंड और डॉर्सल ट्यूबरकल, तीनों को हम कलेक्टिवली वी कॉल इट एज न्यूरल कॉम्प्लेक्स. सो ऑल द थ्री कंपोनेंट्स ऑफ न्यूरल कॉम्प्लेक्स हैव ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड. क्या क्या थे एक बार मैं आपको ये डायग्राम 4.23 में दोबारा दिखा देती हूँ. तो इसमें हमारे पास क्या है? नर्व गैंग्लिया है, देन वी हैव न्यूरल ग्लैंड एंड देन वी हैव डॉर्सल ट्यूबरकल. तो इन तीनों को कलेक्टिवली हम न्यूरल कॉम्प्लेक्स कहते हैं.